Okay, so we'll start our class with some prayers. So we'll pray to our Guru, our Parampara, and to the Lord Krishna and Bhagavad Gita itself, so that whatever we try to understand Bhagavad Gita, we get a good understanding basically by their lessons. अच्छा, इंग्लिश हिंदी कंफर्टेबल है? हिंदी चलेगा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम अभी थोड़ी प्रार्थना करेंगे भगवान से, गुरु परंपरा से, ताकि हम जो भागवत गीता के ऊपर चर्चा करें वो हमें समझ में आए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम करोति वाचम तम गंगायते गिरिं यत्कृपातमहं श्री गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य। One minute, obviously. So we are on 10th chapter, Shloka 19 onwards. Those who don't have the books and have some mobile network, they can go on vedabs.io. नेटवर्क चल रहा है तो इधर एयरटेल नहीं चलता, इधर सिर्फ जियो चलता है। अच्छा, हम इसमें से देख लेंगे। ओके कौन कौन पहली बार भागवत गीता क्लास में आए? ओके, पहली बार आप आ चुके हैं, आ चुके हैं। ओह अच्छा अच्छा, आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं? ठीक है ठीक है। She's from Goa. Okay. अच्छा. She's not your relative. Oh, that's what. You are not related. Okay, nice, nice. ठीक है. What's your good name? Falguni. Okay, so we are doing chapter 10, verse number 19. So I'll give you a quick background. What has happened till now? Very squeezed summary. Right. So basically, Bhagavad Gita started on the battlefield of Kurukshetra. The war was about to start, and both sides had blown the conch shell. And then Arjuna asked Krishna to take the chariot right in the middle of the two armies, so that he can actually observe and see who all has come to fight. So when he said that, Krishna took his chariot. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He was acting as Sarthi of Arjuna.
right? And he took the chariot right in the middle of the army, exactly in front of Bhishma and Drona. So looking at his grandfather and his guru, naturally Arjuna, who's a very great devotee, his heart melted. Like, why am I fighting? Whom I am fighting against, right? It's better to die, with no weapons in my hand, right? And willingly die versus trying to, fight against such personalities. So Guru and the grandfather, these are personalities, these are elders whom should not even be offered verbal fight, what to speak of physically fighting, right? So he was thinking like that, and then he gave very, very powerful reasons for not to fight. So his hands was shivering, his body was shivering, this famous Gandiva bow was slipping from his hand, and his mouth was drying up. He was almost on the verge of crying. And he turned to Krishna. He's like, what should I do? I don't feel like fighting. And then he gave five very, very powerful reasons for not fighting. And the entire Bhagavad Gita is answer to those five questions for not fighting. So Bhagavad Gita is Krishna answering or addressing those five questions by Arjuna, right? Why he never wanted to fight. So Krishna one by one. Actually, in the second chapter, he gives all the reasons for not, all the refutations to Arjuna's arguments. Krishna starts speaking in the second chapter, by the way. And in the second chapter, it's almost like a summary of Bhagavad Gita. So all the five questions are addressed in the second chapter. And from third chapter onwards, till 18th chapter, the elaboration of those questions further on, right? So what are those five questions? Anyone? So first reason he gives is compassion, right? So many people have assembled. There were 64 crore people who had assembled on the battlefield of Kurukshetra. Everyone will die, right? How can we, just for winning our kingdom, kill so many people? So compassion, that was the first reason. Then he said, sinful reaction, right? So many people will be killed, there'll be so much sin. And then third, he said, even after doing so much, no enjoyment. Because kaun marega samne? All the relatives, the people whom you want to enjoy with, right? If you see, you don't enjoy anything on your own, right? Agar aapko bahut kuch hai, you are super rich, you have all the facilities, and you're alone. What is the use of that? Right? So you want to enjoy with your family, with your friends, with your relatives. So all of them will die. What is the point of even winning this kingdom? So there are such powerful arguments, right? And then he said, Varna Shankar. Varna Shankar means all the Kshatriyas are here on the battlefield of Kurukshetra, right? All the upholders of religious principles, because Kshatriyas are meant to, do administration and ensure people are following the rules and regulations. There is dharma in society, etc. Of course, guided by Brahmanas. So all the Kshatriyas will be killed. Women will be left with Shudras and other classes men. So later on, whatever the family traditions, etc., will be completely lost and destroyed. So Varna Shankar means destruction of family tradition. And again, such a powerful argument. Right? And lastly, he said, I am confused. I do not know what to do, what not to do, what is right, what is wrong. Completely confused. So confusion was his last argument. So like that, he gave very, very powerful reasons for not fighting. And Krishna addresses all of them in second chapter and then keeps on elaborating. So from third chapter till I think sixth chapter, first six chapters primarily talk, although it talks a lot of other things, but mainly the subject matter is Karma Yoga. Then the middle six chapters are actually the most important. It's like the cream in the cream biscuit, right? So right in the middle. So middle six chapters talk about devotion service to the Supreme Personality of Godhead, which is chapter 7 till chapter 12. And then chapter 13 till 18, Krishna talks about Jnana Yoga. Jnana Yoga. So again, there are many subject matters. There are descriptions of all the different types of yogas also coming in various chapters, but predominantly these are the three sections of the entire Bhagavad Gita. So Krishna talks about transcendental knowledge. He talks about again Karma Yoga in the fifth chapter. Then he goes on to talk about Ashtanga Yoga in the sixth chapter. Then he starts Bhakti Yoga from the seventh chapter, eighth chapter, and ninth chapter is the most confidential knowledge, where he describes how there is loving exchange between him and his devotees. What is the mentality of a devotee and how he acts in that devotion,
and how Krishna reciprocates to that devotion. That's discussed in the 9th chapter. And in the 10th chapter, Krishna continues that discussion on devotional service, describing how one can remember him, very easily. So he talks about different opulences of his personality. He talks about how he's everywhere, and we'll see a lot of vibhutis right now, right? And then he goes on to he's basically describing from first sloka till I think the 9th or the 10th sloka. He's describing how someone does devotional service and what is the result of that doing that devotional service, right? Or how someone knows that he is the supreme, how someone knows that everything is coming from him, and by knowing that, one dedicates himself more and more to the Lord. So he's describing literally what is the result of understanding Krishna even little, right? One aspect of Krishna you understand, you surrender to him. Some other aspect of Krishna you understand, you surrender even more. So like that, he's giving information so that it becomes easy for us or facilitates us to surrender to Krishna. When you know that everything is coming from the Lord, he's a maintainer. He can do anything and everything, right? Just like, and he's your best friend, right? So just like, you know, you have some work, right? There's some, just for example, some municipal work or something, and that work is not happening, and somebody is saying, "Nahi, nahi, main nahi karunga." So if you have some good pehchan, right? अरे मैं तो ये कलेक्टर को जानता हूँ, मिनिस्टर को जानता हूँ, गवर्नर को जानता हूँ, right? We say that immediately. You don't know who I am. You don't. मेरा backing क्या है तुमको नहीं पता है, right? So we throw our weight like that, isn't it? So imagine when you know that Krishna is your backing, right? Krishna can do anything, everything, absolutely anything and everything, right? When you have full faith and confidence that yes, my backing is Krishna, right? And to actually, as an obligation to the confidence that you show, Krishna reciprocates like that. Prahlad Maharaj, he said very confidently, yes, Viṣṇu is in that pillar, right? The minute he said that, the minute he finished those words, the Supreme Personality, although he's there in every atom as, Paramatma, he manifested himself as Narasimhadev in the pillar. Like, my devotee showing such confidence, I better be there. Right? So he himself manifested as Narasimhadev in the pillar, waiting ki we marega, talwar marega nalka paunch, like that. So just to keep the promise ka laaj rakhne ke liye, like that. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So, like that, Krishna is exclaiming, and the 4 verses in the 10th chapter from 10.8 to 10.11, these are actually crux of the entire Bhagavad Gita. These are not Chatushloki Bhagavad Gita. So, basically, these are simple verses, but then, it basically says everything. How Krishna is Supreme Lord, how, he basically, devotees, they talk about him, they discuss about him, and now he only gives them knowledge to come back to Krishna. So that's the Chatushloki Bhagavad Gita from 10.8 to 11. And then Arjuna is inquisitive now. He says, okay, I've understood everything. I understand you're the Supreme Personality of Godhead, not just me, all the great sages, etc. They all, also say this, that you're the Supreme Personality of Godhead. And he's curious to know more about his opulences. And he's requesting Krishna, please tell me more about your various opulences. So now Krishna is continuing to talk about his opulence. So let's chant the 19th sloka. Shri Bhagavan Vacha Hanta te kathayasyami Divya hi atma vibhutaya Pradhanayata Kuru Shrestha Nasti Anta Vistarasya Me Shri Bhagavan Vacha Hantate Kathayasyami Divya hi Atma Vibhutaya
Pradhanayata kuru shrestha nasti anto vistarasya me. Anyone would like to chant? Chant the shloka one line, we'll follow. Hantate katayisyami divya hi atma vibhutaya pradhanyata kuru shrestha nastyanto vistarasya me. Shri Bhagavan Vacha Antate Katayisyami Divya hi Atma Vibhutaya Pradhanayata Kuru Shrestha Nastyanto Vistarasya me. Anyone else would like to chat? Or should I continue? Okay, let's go to the translation. Someone can, you want to read the translation? The Supreme Personality of Godhead said, yes, the value of my spirit, splendorous manifestation, but only of those which are prominent. O Arjuna, for my opulence is limitless. Yes. So the Supreme Personality of Godhead said, yes, I will tell you of my splendorous manifestation. Arjuna just requested, please tell me of your opulences more and more. Right? Because already he mentioned his opulences several times. But he is still, wanting to hear more. That is the nature of devotee. Actually, topics of Krishna is unlimited. Right? One can never understand Krishna completely. Because Krishna is unlimited. Right? So to actually come to a point that yes, I know everything of Krishna, that's not possible. It's not possible only, right? So devotee is wanting to know about Krishna not because he wants to completely understand Krishna at some point in time, right? But he is someone who's relishing to hear about Krishna more and more, right? So 10.9, which I was talking about, part of Chaturshloki, also discusses this, where Krishna is describing how devotees relish, talking about Krishna. Mat chitta madgata prana bodhayanta parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. So their tushyanti and ramanti, their satisfaction and enjoyment is bodhayanta parasparam, discussing amongst themselves what kathayantascha mam nityam. They are constantly discussing Krishna Katha, and that's their point of satisfaction and relish. So therefore Arjuna is very eager to hear more and more, and he's requesting the Lord, please tell me more about your opulences. And of course, even for us, for all of us to understand about the greatness of the Lord, a lot of times what happens is we try to, so there is Krishna's greatness, and then there is Krishna's sweetness. So a lot of times we jump to the sweetness, right? Because obviously we are all looking for pleasure ourselves. To hear sweet pastimes of the Lord is very, very enjoyable, very nice. But the danger in trying to just jump to the sweet part, like a lot of people, there are a lot of Bhagavad reciters. They may directly, take Bhagavad Sapta and jump to, the 10th canto. There is Srimad Bhagavatam, which are 12 cantos. 12 cantos. So they directly jump to the 10th canto. And particularly, they will jump to either the childhood pastimes or the last pastimes of Rashleela pastimes of the Lord. Which are very, very confidential pastimes. So they're trying to jump to the sweet pastimes of the Lord without establishing how great the Lord is, or without establishing the supremacy of the Lord. So a lot of time what happens is people think, अरे हाँ कृष्णा तो छोटे थे माखन चुराया मेरे घर पे भी बेटा है वो भी ऐसे ही चोरी करता है. We start comparing or we think कि हाँ just like this is a child, that is a child, right? Just like he did this, my son also does, or my grandson also does, right?
So that supremacy part or opulence part or the greatness of the Lord is lost, right? And we take it cheaply. Yeah, ये भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है. Therefore, a lot of people think, अरे भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो character ढीला, right? This dialogue comes particularly because they don't understand, the greatness of the Supreme Lord or any, aspect of the Supreme Lord. भगवान के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये सारे dialogue आते हैं, right? Imagine if, let's say, somebody comes here and meets you, you'll greet them nicely, welcome them, and you'll say thank you for coming and meeting. थोड़ा सा जैसा आदर सत्कार है वो आप करोगे, ठीक है? अब पता चलता है कि अरे ये जो व्यक्ति है वो तो एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट है, राइट? अब वही व्यक्ति आ रहा है वापस. When you welcome him, will it be same? When you talk to him, will it be the same? Right? Your dealings will completely change, and you will feel so obliged. You will feel so grateful. अरे ये मेरे से मिलने आ रहा है, right? Before the guy comes, you will be happy, right? ऐसे ही बोलो नीचे से कोई आ रहा है आपको मिलने के लिए, हैप्पीनेस कितना होगा आपको, right? कितनी खुशी होने वाली है, ठीक है आ रहा है दो, right? But if that same guy is a US president and he's coming specifically to meet you, so imagine this is the master of not just one universe, unlimited universe, right? And when he deals with his devotees in such loving ways, such simple and sweet ways, right? When you realize that, when you realize his greatness first and then sweetness, that sweetness is multiplied a million times, right? You realize, अरे he's and क्या कर रही है? You अर्जुन के लिए रथ चला रहे, right? और रथ चलाना मतलब वैसा ड्राइवर वाला काम तो है, लेकिन उन दिनों में कैसा काम था? The warrior would sit behind, and since in the war there was a lot of noise, so the warrior has to keep both his feet like this on the shoulder of the सारथी. So अगर लेफ्ट मुड़ना है तो बोलने की जरूरत नहीं, लेफ्ट मुड़ना है, राइट ऐसा प्रेस करने का कंधे तो लेफ्ट मुड़ देते हैं. इधर जाना है तो ये साइड प्रेस करो तो उधर निकल जाएगा. So imagine the Lord took that position, right, where he is having the feet of Arjuna on his shoulders and he's willingly accepting that and taking turns left and right, right? Hare Krishna. So therefore we need to understand the opulence of the Supreme Lord, and इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे benefit के लिए, so that we understand. So Prabhupada writes, it's not possible to comprehend the greatness of Krishna and his opulence. The senses of the individual souls are limited, not permit him to understand totality of Krishna's affairs. Still, devotee tries to understand Krishna, but on the principle that he'll be not on the principle that he'll be able to fully understand Krishna at a specific time. Rather, these topics are relishable. Just what I said, I think earlier. And Krishna here is saying that I am going to talk about my opulences only of those which are predominant. Right? तो आगे चल करके, because Krishna's opulences are unlimited. सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ चीजें पकड़ करके predominant, वो भी predominant कैसा, आगे चलेंगे तो हमको पता चलेगा. Only things which are observable by us, right? Or which can come in our experience, right? So agar suppose somebody is in India, he's never gone outside, or forget India, actually I think I'll take Prabhuji's example, very apt example he every time gives of Dr. Frog, right? Prabhupada example here. So Dr. Frog is in a well, and one friend comes from outside. He's like, "Hari, there is such a vast ocean. What are you doing here?" Right? The ocean कितना बड़ा है? इतना बड़ा? And he swells up his throat. नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, बहुत बड़ा है. 4 times this well, swells up more, right? बोला नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत बड़ा है. You don't know. Like 10 times big. And like that he goes on doing and like bursts completely because he's swelling up more and more and more, right? He cannot comprehend
right? Because it's out of his experience. He cannot comprehend what is an ocean. उसने खाली वेल देखा है, right? तो इसीलिए भगवान अभी आगे चल करके जो एग्जाम्पल्स देंगे, they are all related to things which are of the material world, of this earth planet mostly, right? Or whatever is part of Arjuna's experience within the earthly realm. So he'll give those examples or comparisons, right? भगवान तो यूनिवर्स में कुछ भी उठा के एग्जाम्पल दे सकते हैं, but he gives those examples which are so predominant also, which is within the experience of Arjuna or within our experiences. I think not all things which is part of Arjuna's experience is also part of our experience. That's also different. But ठीक है, एटलीस्ट वो अर्थली एक्सपीरियंस में जो भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे भगवान की आंखें कंपेयर की जाती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे. All different parts of Krishna's body is compared with lotus, right? So they're as soft and soothing as lotus, because that's the best example available. Krishna's body is much more softer, right? He's much more soothing to the eye, a trillion times more than a lotus. But that's the best we know, and we can compare. So therefore, that example is given. You want to add something, Marīci? Next sloka. Aham atma gudakesha sarva bhutasya stita aham adischa madhyam cha bhutanamanta eva cha. Aham atma gudakesha sarva bhutasya stitah aham adischa madhyam cha bhutanamanta eva cha. Someone can read the translation. Yeah, loudly. I'm the super soul. So यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, he's starting to describe, right? I am the super soul, O Arjuna, seated in heart of all living entities. I'm the beginning, the middle, and the end of all beings. अभी हमें सुपर सोल पता है, कितने सुपर सोल होते हैं, कितने परमात्मा होते हैं? 4. 84 लाख परमात्मा होते हैं. हर एक स्पीशीज के लिए अलग. एग्जैक्टली. परमात्मा कितने? बहुत है. कौन बोलता है बहुत है? कौन बोलता है एक है? हाँ, एक है. Multiple forms. Okay. How is Paramatma present in the material world? He's present with each and every atom, with each and every living. And he's what is the example? भगवान क्या भगवद गीता में एग्जाम्पल देते हैं, मैं हर जगह प्रेजेंट हूँ. किस तरह से? No, he's not saying that. No, he's rather saying that जो मर रहा है वो शरीर है, जो मार रहा है वो भी शरीर है. The soul is neither the slain nor the slain. Not the slayer, sorry. So Krishna says in Bhagavad Gita कि he is present everywhere. Sutra mane ganaiva, just like a thread in a pearl necklace. He gives that example. भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो एक माला में एक धागा रहता है, मोतों की माला है अगर, तो उसमें एक धागा है. उस तरह से वो सारे जगत में हर जगह प्रेजेंट है. तो धागा कितना होता है? कितने धागे होते हैं? एक ही होता है, राइट? एक धागा है और वो माला में हर जगह है और वो विजिबल भी नहीं है, करेक्ट? सो उसी तरह से भगवान सारे जगत में फैले हैं, हर एक कण कण में है,
जिस तरह से एक धागा, एक सूत्र मणियों के माला में प्रेजेंट है, तो धागा भी एक है, दिखाई भी नहीं देता है, धागा ना हो तो माला ही नहीं राइट, उसकी वजह से सब कुछ टिका हुआ है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल भगवान देते हैं। तो कितने परमात्मा है? एक, राइट, बट एक्चुअली तीन है सो वैसे तो वास्तव में एक ही परमात्मा है, सेम, बट जैसे क्रिएशन में बोलते हैं सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, आगे उसके, हाँ वो तीन नहीं है, वो तीन नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इफ आई वुड हैव हैड अ बोर्ड आई वुड हैव शोन ओके। सो हम जो क्रिएशन हमने सुना है, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, पूरा जगत बनता है एक्सेट्रा, उसके पहले भी बहुत सारे लेवल्स के क्रिएशन होते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज फॉरगिव मी एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल पूछ सकते हैं। बट श्रीमद् भागवतम में क्रिएशन का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे वास्तव में ये सारा जगत प्रकट होता है। तो वास्तव में हर एक चीज, जितना भी क्रिएशन है, आध्यात्मिक और भौतिक, सभी स्पिरिचुअल स्काई के अंदर है, आध्यात्मिक आकाश के अंदर है। और वहां पर ये जगत बनाने का क्यों जरूरत पड़ा भगवान को, सबसे पहला वो डिस्कस करते हैं। जैसे एक स्टेट में जेल होता है, राइट, व्हाई डज द स्टेट नीड्स टू क्रिएट जेल? जेल की क्यों आवश्यकता है? अगर मान लो कोई प्लानिंग कर रहा है कि अरे सिटी मास्टर प्लान, स्मार्ट सिटी बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, वो सब प्लान करता है, साथ में एक जेल भी बनाता है, राइट। अब सारी सुविधाएं बना दी, सड़क बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, सब बना दिए, लेकिन जेल भी बनाया। क्यों जेल बनाया? राइट, हाँ। So those who are not following the rules and regulations, right, those who are causing chaos in the society, so the state creates a place for them called jail, right? उसी तरह से we are all belonging to the spiritual world. हम जीवात्मा है, we are souls, we are not this body, right? That's the first lesson of Bhagavad Gita, जो सेकंड चैप्टर में भगवान शुरू करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा आध्यात्मिक है, राइट, आत्मा आध्यात्मिक है। तो वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। बट सो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ मटेरियल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द मटेरियल बॉडी, राइट। सो दिस होल मटेरियल क्रिएशन, जितना भी भौतिक जगत है, ये बनाया गया एक जेल की तरह है। हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? रिफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज वी वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट फिट टू कंटिन्यू लिविंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही एक सेक्शन है भौतिक जगत, जो कि एक जेल की तरह है कि जाओ, रिफॉर्म हो, बिकम प्योर, कम बैक। बोलिए। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि आत्मा सब पावन, सब पावर पावन पावन होती, करेक्ट, सोल इज प्योर। The Atma also wants to understand what is negative. To understand negativity, it is sent down to. नहीं, That is what. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। से हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे उसको नेगेटिविटी समझना होगा या क्या होगा। हम हाँ, समझना चाहते हैं ग्रोथ क्या है, नहीं वैसा नहीं है। तो वो समझने के लिए हम लोग नीचे आते हैं। सो ये हाँ, आपका सवाल मैं समझ गया लेकिन वैसा नहीं है कि हमें नेगेटिविटी समझना था इसलिए हम आ गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पे नेगेटिविटी नहीं है डेफिनेटली, बट वहां क्रोध है। जितने भी गुण आप देखते हैं, एंगर या ग्रीड या जो भी है, राइट, आपको लगता है यार ये तो सारे नेगेटिव क्वालिटीज है, ये तो एकदम खराब है, किसी में नहीं होना चाहिए, खास करके साधु में तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए, राइट, ऐसा हमारा नॉर्मल धारणा है लोगों का। तो वास्तव में यू कैनॉट बी फ्री फ्रॉम एंगर। क्यों? क्योंकि भगवान से, हम भगवान के अंश है, आत्मा जो है भगवान का अंश है। नाउ कृष्णा हैज द क्वालिटी ऑफ एंगर, therefore the part also has the quality of anger। ये गुण जो है क्रोध का स्वयं भगवान में है,
राइट? बट उनमें कैसा क्रोध है? वो उनमें जो भी गुण है दे आर इन ऑन एन एब्सोल्यूट प्लेन. एब्सोल्यूट प्लेन मतलब कि अगर वो क्रोध भी करेंगे, मान लीजिए जैसे इतने सारे असुर भगवान ने मारे, राइट? तो ऑब्वियसली व्हेन ही इज किलिंग ही इज इन एंगर. भगवान में क्रोध है, ये उनका एंगर कैसा, उसको मार भी दिया लेकिन उसको क्या मिला? मुक्ति मिल गया. सो उनका क्रोध जो है उनकी कृपा के तुल्य है. That is the absolute nature of Krishna's qualities, right? So his anger is equal to his mercy. Our anger is not equal to our mercy. Right? Like a person who comes down to the earth. So it is not that we came down to experience anger. No, we had the experience of anger in the spiritual world also. Not that अरे anger experience है चलो नीचे जाते हैं, नहीं. The soul came down or was sent to the material world because we wanted to play God. Play God. Right? Arey, why is Krishna only the enjoyer? Why I am not the enjoyer? Right? ये ऐसा डिजायर आ गया ना, आध्यात्मिक जगत ऐसा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सच कि आप जो इच्छा करो तुरंत पूरा होता है. Right? वहां के एक एक वृक्ष, कल्प वृक्ष, right? Desire fulfilling trees. Every stone is a touchstone, right? Chintamani stone. They will fulfill your desires. So, since you desire to enjoy separately from Krishna, although हम कृष्णा के साथ बहुत आनंद में थे, right? There cannot be enjoyment apart from Krishna. भगवान से अलग रह करके हम enjoy कर ही नहीं सकते हैं. जिस तरह से ये उंगली मेरे से शरीर से जुड़ा हुआ है, अब उंगलियां बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो अलग से गुलाब जामुन खाना है, मैं क्यों मुंह में डालूं? Why should I serve the body? Why should it go to the rascal stomach? Right? Why the stomach is enjoying so much? I should enjoy separately. Possible for the fingers to enjoy separately. Right? उंगलियां खा सकती है अलग से, गुलाब जामुन स्क्वीज कर ले थोड़ा सा. नहीं होएगा. राइट? कितना भी कोशिश कर ले, और जब ये पोषण यहाँ नहीं डालेंगे तो क्या होगा? जो उसको एनर्जी मिल रही थी काम करने की वो भी नहीं मिलेगी. Right? But minute it serves the whole body, the अंश है पूर्ण की सेवा में जब लगता है, they are internally satisfied. अंदर से उसको जितनी शक्ति चाहिए काम करने की सब मिल जाता है. उसी तरह से आत्मा जो है जब भगवान से जुड़ता है सेवा के माध्यम से, राइट? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. अंश जो है पूर्ण की सेवा में जब जुड़ता है, वी आर इंटरनली सेटिस्फाइड. एक्सटर्नली फिर आपको कितना मिले नहीं मिले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वी आर इंटरनली सेटिस्फाइड. तो इसीलिए हम भगवान से अलग होकर के एंजॉय कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारी इच्छा हुई नहीं हमको एंजॉय करना अलग से. राइट? जैसे छोटी बेटी बोलती है ना, अरे मेरे को मम्मी मम्मी रोटी बनानी है. अभी मम्मी बोली कहाँ से रोटी बनाई, हाइट भी नहीं ऊपर आके कुछ कर सके. राइट? और कहाँ गैस पे उसको कुछ देंगे. तो व्हाट ही डज, उसको टॉय किचन लेके देती है, खेलो. और वो मस्त रोटी बना रही है, दाल बना रही है, और लेके पापा पापा दाल खाओ. वो पापा भी ऐसा एक्टिंग करता है खाने का. राइट? So she's playing the whole day, enjoying, right? Trying to enjoy dal, chawal, roti, all of that. But जब सही में भूख लगेगा क्या करना पड़ेगा उसको? He has to cry out, अरे मम्मी खा रहा हूँ. Right? So Krishna created this toy world for us. Right? जाओ play God. Right? So उसको बोलिए हाँ, तो you become the cook. So Krishna gave us the toy world, play God. कुछ तुम्हारा नहीं है लेकिन तुम बोल सकते हो ये घर मेरा है, ये मेरे रिश्तेदार है, राइट? ये मेरा है, ये मेरी बेटी है, बेटा है, जो भी है, राइट? नथिंग बिलोंग्स टू यू. ये शरीर भी हमारा नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं ये सारी चीज. राइट? एंड वी आर ट्राइंग, एवरीवन इज ट्राइंग टू बी नंबर वन. एवरीवन वांट्स टू एंजॉय. क्या मेरा बात सुनना चाहिए, राइट? मेरा काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता है. राइट? क्यों? वी आर ट्राइंग टू be master. We are trying to play God. और क्या होता है? One God, quote unquote God, or the center of the universe. ये सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए. One center of the universe
comes in contact with another center of universe, क्या होगा? क्लैश होगा. मेरे लिए होना चाहिए, नहीं मेरे लिए होना चाहिए, right? And they'll fight. So इसलिए भौतिक जगत क्रिएट किया गया ताकि हम खेल सके, और जब हम थक जाए तो हम भगवान के पास वापस जा सके. सो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सुपर सोल हूँ, राइट? तो 3 लेवल्स ऑफ क्रिएशन, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम हो गया एक्चुअली, सॉरी, बट 3 लेवल्स ऑफ क्रिएशन है. तो भगवान जो है हर जीवात्मा में, कण कण में समाहित है, भौतिक जगत में, पूरे यूनिवर्स में. तो वो यूनिवर्स की आत्मा है, राइट? परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में है, बैठे हैं. तो परमात्मा है, पूरे यूनिवर्स का एक यूनिवर्सल फॉर्म भी है, which is the Paramatma of the entire universe. That's the second Paramatma. And third Paramatma is the Kārttikeya Viṣṇu, वो अभी डिटेल सॉरी आपको नहीं बता रहा हूँ. Kārttikeya Viṣṇu who glances on this material world and actually starts creation. क्रिएशन चालू होता है, महाविष्णु लेटे हैं, सांस ले रहे हैं, उनके शरीर से बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एक्सपैंड, एंड वो उसको फिर ग्लैंस करते हैं, तो क्रिएशन स्टार्ट होता है. फिर वो विस्तार करते हैं, गर्भदक्षय विष्णु बन के जाते हैं, हर एक यूनिवर्स में एंटर करते हैं, और वहां पे फिर कारण सागर में लेट करके अपने नेवल से उनका लोटस स्प्राउट होता है. फिर ब्रह्मा जी बॉर्न होते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं. तो ऐसा थोड़ा लंबा प्रोसीजर है. और यहाँ पे प्रभुपाद श्लोक भी कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता से. यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा, निद्रम अनंत जगदंड सरोम कूपा, आधार शक्ति अवलंब्य पराम सुमूर्तिम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. बता रहे हैं, द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, lies down in the cosmic ocean as Mahavishnu. Therefore, the Supreme Personality of Godhead is beginning of this universe, the maintainer of the universe, and the manifestation and the end of all energy. तो वास्तव में जो क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी, तो सब क्रिएशन करते हैं. भागवतम में बोला जाता है सर्ग और विसर्ग. सर्ग इज प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग इज सेकेंडरी क्रिएशन. तो ब्रह्मा जी जो है सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं. वो सारा क्रिएशन महाविष्णु के शरीर में देखते हैं, फिर उसको रेप्लिकेट करते हैं, फिर पूरी सृष्टि की रचना करते हैं. वरना तो उनको पता ही नहीं है, जब वो बॉर्न होते हैं उनको पता ही नहीं करना क्या है, मैं क्यों बॉर्न हुआ, क्या है पर्पस, कुछ नहीं पता है. तो भगवान उनको हृदय में प्रेरणा देते हैं, फिर वो तपस्या करते हैं, उसके बाद भगवान उनको दर्शन देते हैं, उनको पूरा सृष्टि कैसे करना है बताते हैं. प्राइमरी क्रिएशन सारे एलिमेंट्स भगवान क्रिएट करके देते हैं, फिर उन्हीं को यूज करके ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन चालू करते हैं. तो क्रिएटर देखा जाए इज विष्णु, राइट? ही इज अ मेंटेनर, इज अ क्रिएटर, एंड इवन डिस्ट्रक्शन. हालांकि शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में जब सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सब कुछ महाविष्णु सॉरी सब कुछ गर्भदक्षय विष्णु के नेवल में वो लोटस बंद होकर फिर चला जाता है. तो एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन इज आल्सो विष्णु. और जो शिव जी है वो विष्णु जी के एक विस्तार रूप है, एग्जैक्टली विष्णु नहीं है, वो अलग कॉन्वर्सेशन है, बट उन्हीं के एक विस्तार रूप. ओके, नेक्स्ट वन. अभी यहाँ से बहुत सारे, और एक सेकेंड, आई थिंक एक चीज मैं भूल गया प्रीवियस श्लोक में मेंशन करना. यहाँ पे भगवान जब श्लोक में बोल रहे हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश, राइट? वो अर्जुन को गुड़ाकेश करके संबोधित करते हैं. गुड़ाकेश का मतलब किसको पता है यहाँ पे? अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश. गुड़ाकेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि अर्जुन सोते नहीं थे, उन्होंने he had won over sleep, निद्रा को जीत लिया, राइट? वो रात को भी प्रैक्टिस करते थे शूटिंग. तो इसलिए उनका एक नाम पड़ा गुड़ाकेश, राइट? सो गुड़ाकेश मतलब निद्रा को जीतने वाला, और एक तरह से इग्नोरेंस. स्लीप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इग्नोरेंस. तो इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता. अज्ञानता को जो जीत ले वो इग्नोरेंस से ऊपर उठ जाता है. तो यहाँ पर for those who are sleeping in the darkness of ignorance, it is not possible to understand how the Supreme Personality of Godhead manifests himself in various ways in the material and spiritual worlds.
जो अज्ञानता में है उनको भगवान के बारे में इतना समझ में भी नहीं आएगा, वो कभी चर्चा करने का इच्छा भी नहीं होगा और वो समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवान उनको गुणाकेश संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह अर्जुना हैज कॉन्कर्ड इग्नोरेंस एंड देयरफॉर ही इज रिवीलिंग दिस नॉलेज टू अर्जुना एंड ही कैन अंडरस्टैंड. Like that, we can also hope to understand and come out of ignorance. Okay. Next one. Ādityanām aham Viṣṇur Jyotisam Ravir Amshuman Marīci Marutam Asmi Nakshatranām aham Shashi. Someone can read the translation. Of the Ādityas, I am Viṣṇu. Of lights, I am the radiant sun. Of the Maruts, I am Marīci. And among the stars, I am the moon. Yes. Of the Ādityas, I am Viṣṇu. Right? Of all the Ādityas, he is Viṣṇu. Of the lights, I am the radiant sun. What is the best source of light? Sun. Right? The idea of the scientists that all the stars are actually different suns but very distant. Not true. Right. And of the Marutas, I am Marīci. Amongst the stars, I am the moon. So Sri Prabhupada used to, nicely, a funny statement, he would say that, hey, what are the use of these rascal stars? One moon is enough, right? There are so many stars at night, but they don't give you sufficient light, right? Especially if you ask the sailors, right? Those who are actually in the middle of the sea, तो रात को उनको light लगता है, right? Because they are not able to see beyond a certain distance, etc., and they can get lost. So whenever there is moonshine, it actually helps them a lot. So that way, there will be so many millions of stars in the sky, but that doesn't help so much. Of course, pole star is there, that also help in direction, etc. But in general, they don't provide enough light to look ahead. But if there is moonlight, still they are able to kind of have some visibility like that. So Prabhupada used to say, what is the use of all these rascal stars? The one moon is enough. Like that. He used to compare that, what is the use of so many people who are quote unquote, good, nice, right? What you call cultured, etc. Right? What is the point of having so many people? One devotee, that's good enough. Right? One devotee, because the purpose of human form of life is actually to understand who we are and surrender to Krishna. So even if you follow, Varnashram Dharma also very, very nicely and dedicatedly in your entire life, what is the use? If you're not, ultimately, if it's not leading to cultivating devotion to Krishna, अगर भगवान की भक्ति जागृत नहीं हो रही है उससे, तो क्या फायदा? भले आप कितने भी रिचुअलिस्टिक वे में पूरा वेदास को फॉलो करो, कुछ फायदा नहीं है. पूरा वर्णाश्रम धर्म अच्छे से पालन करो, अपना सारा ड्यूटीज निभाओ, क्या फायदा? वही साइकिल में घूमते रहना है. Birth, death, old age, disease, right? So इसलिए भले हाँ हाँ so हाँ so wind is the controlling deity of wind. So Marīci of the Marutas is Krishna, one of the deities controlling the wind. यहाँ पे प्रॉपर दे रहे हैं. There are 50 varieties of wind blowing in space, and of these winds, the controlling deity Marīci represents Krishna. Right? Among the stars, the moon is prominent at night. Okay. The theory that there are many suns within the universe is not accepted in Vedic literature. Sun is one, and by reflection of the sun, the moon illuminates also to the stars. Since Bhagavad Gita indicates here, the moon is one of the stars. The twinkling stars are not suns, but similar to moon. Let's do 2-3 more and stop. Okay. Vedanam Sāma Vedosmi Devanam Asmi Vasavaha Indriyanam Manas Chasmi
भूतानामस्मि चेतना. So like that Krishna अभी एक एक करके अपनी विभूतियां गिनाएंगे till the end of the chapter, till the 40th shloka. We'll do a few shlokas now and then we'll stop. So translation of this. Of the Vedas I am Sāma Veda. Of the demigods I am Indra, the king of heaven. Of the senses I am the mind, and of the living beings I am the living force, that is consciousness. So पहले वेद एक ही था, फिर उसको डिवाइड करके चार हो गए. पहले साम वेद था, फिर उसको डिवाइड करके ऋग, साम, यजुर, अथर्व ऐसे करके चार हो गए. So the Vedas I am Sāma Veda, and Sāma Veda में क्योंकि there are more and more descriptions of Krishna and Bhakti Yoga etc. तो इसलिए Sāma Veda. Of the demigods I am Indra, king of heaven. सारे इंद्रियों का राजा कौन? आपकी जितनी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनका राजा कौन? मन. इसलिए of all the senses I am the mind. In the living entities I am the living force. Right? जितने भी जीवात्मा है उसका है living force like that. So Krishna essentially is talking how he is the essence of everything. Okay? Let's go to the next one. Rudranam Shakaraschaśmi Vitesho Yakṣas Rākṣasas Vasunam Pavakaschaśmi Meru Shikharinam Aham. Translation. Yakṣas and Rākṣasas I am the Lord of Wealth. Kuvera. Of the Vasus I am fire, Agni, and of the mountains I am Meru. So again, भगवान अलग अलग चीजों में मैं कौन हूँ बता रहे हैं. रुद्रों में शिव, यक्ष या राक्षसों में कुबेर जो कि देवताओं के ट्रेजरर है, वसुज में वो अग्नि है और पर्वतों में मेरु है. There are 11 Rudras. हाँ. वो 11 Rudras मतलब कौन है अभी सारे नाम मुझे नहीं पता. So ब्रह्मा जी के क्रोध से वो यहाँ ऐसा इसके बीच में से सारे रुद्र निकले थे, 11 रुद्र निकले थे. तो उसमें शंकर जी एक रुद्र है. हाँ. पुरोधसां च मुख्यं मां विधि पार्था बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसाम् अस्मि सागरा. Translation. Of peace, O Arjuna, know me to be the chief Bṛhaspati. Of generals, I am Kārttikeya, and of bodies of water, I am Agni. So सारे जो साधुगण हैं या ब्राह्मण हैं उसमें वो अर्जुना मैं कौन हूँ? बृहस्पति जो देवताओं के भी गुरु है. Right? Of generals I am Kārttikeya. Kārttikeya is a very son of Lord Śiva, बहुत expert chief of army है. एक बार भगवान का युद्ध हुआ था. एक तरफ कृष्णा और सारे यदुस और दूसरी तरफ आई थिंक भौमासुर थे और उनके बिहाफ पे शिव जी स्वयं आए थे. गणेश जी, कार्तिकेय सब आए थे और कार्तिकेय वाज लीडर ऑफ द आर्मी देयर आल्सो. सो ही इज वेरी वेरी एक्सपर्ट एज अ जनरल. ऑफ कोर्स वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कृष्णा बुक में. सो जनरल्स एंड कार्तिकेय, बॉडीज ऑफ वाटर एंड द ओशन. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मीकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया. Translation. Of the great sages, I am Rudra. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy name Japa. And of immovable things, I am the Himalayas. So of great sages I am भृगु. भृगु मुनि इतने महान है कि भगवान के वक्षस्थल पे उनका चरण चिन्ह है. स्टोरी पता है सबको?
नहीं भृगु के चलते में आप उनके जीव का नहीं सो एक बार सारे जो ऐसा बहुत विवाद चलता रहता है, आज भी जाएंगे तो विवाद चलता ही है कि कौन सबसे बड़ा है, विष्णु जी श्रेष्ठ है कि शिव जी श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स में से वाद विवाद चलता रहता है। तो बहुत सारे मुनियों को भी ये डाउट था कि अरे कौन बड़ा है, कैसे पता चले। और तो रंगनाथ जी का भी जब आई थिंक डीटी मिला था तो वो लोग भी कंफ्यूज थे कि ये विष्णु है या शिव है, क्या है। तो सारे मुनियों ने क्या किया, अपॉइंट किया भृगु मुनि को कि आप पता कीजिए कौन श्रेष्ठ है सबसे। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है, विष्णु जी श्रेष्ठ है, कौन है। तो भृगु मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो बोला ठीक है मैं टेस्ट करता हूँ, सब पूरे जगत के कल्याण के लिए मैं टेस्ट करूंगा। तो गए ब्रह्मा जी के पास। तो जैसे ही पहुंचे उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो तुरंत ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बोला तुमको यही सिखाया मैंने, राइट, यही शिष्टाचार है तुम्हारा, तुम्हारा कोई भी सीनियर सामने आता, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ स्वयं और तुमको प्रणाम ही नहीं कर रहे, ऐसा बहुत बोलने लगे। तो बोला कि क्रोध आ गया इनको, इज नॉट द सुप्रीम। सो फिर शिव जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने मन से ऑफेंड किया कि मतलब सॉरी शरीर से कि मैंने प्रणाम नहीं किया है। अब शिव जी के पास गए तो शिव जी को वाणी से ऑफेंड किया। तो वहां पे गए तो शिव जी खड़े हो गए, स्वागत किया। तो और गले वले मिलने, क्योंकि उनके भाई है, राइट, और गले मिलने गए। तो भृगु मुनि ने बोला नहीं 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 दूर रहो, तुम्हारा क्या पूरे शरीर में भस्म लगा है, ये गंदे, ठीक मेरे को नहाना पड़ेगा। शिव जी एकदम गुस्सा हो गए, त्रिशूल लेके भागने लगे पीछे। तो बोला ये भी सुप्रीम है। फिर पहुंचे वैकुंठ। वैकुंठ में गए और एंटर किया तो नारायण जो है सो रहे, मतलब शेषशैया पे रेस्ट ले, और गए सीधा चेस्ट पे लात मारा, सीधा ऐसा फिजिकल अटैक। तो नारायण रिस्पॉन्ड्स, वो साधु श्रेष्ठ आपका चरण बहुत कोमल है, मेरा छाती बहुत कठोर है, आपको लगा तो नहीं। एंड कृष्णा ही वेयर्स द फुटप्रिंट ऑफ भृगु मुनि एज एन ऑर्नामेंट ऑन हिज चेस्ट। तो भगवान का अगर विग्रह देखेंगे, गोपाल का भी अगर आप विग्रह देखेंगे तो छाती में ऐसा, हाँ, भगवान के चरण का सॉरी भृगु मुनि के चरण का सिंबल है। So Krishna, he is actually taking these things from devotees as decoration on his own body. So Bhrigu Muni understood, yes, Vishnu is supreme. So our great sages are in Bhrigu, vibrations and transcendental home, right? Of sacrifices, जितने भी यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया गया है? जप, right? यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। इसलिए कलयुग में दूसरा कोई यज्ञ काम करे ना करे, राइट, एक्चुअली काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वो युग है ही नहीं यज्ञ करने का। दूसरी यहाँ पे आपको शुद्ध सामग्री नहीं मिलता है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जो मंत्रों का उच्चारण कर सके, कुछ पॉसिबल ही नहीं है जो त्रेता युग में यज्ञ होता था वैसा। तो इसलिए क्या है यज्ञ? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन इज द मेन यज्ञ। तो एक बार कृष्ण बलराम मंदिर का ओपनिंग था और श्री प्रभुपाद ने क्या किया था, एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और साथ में एक दूसरी जगह बिठा दिया डिवोटीज को कीर्तन करते हुए। तो एक भक्त ने पूछा कि अरे ये दोनों कैसे चल रहे हैं साथ में? बोला हाँ, ये जो यज्ञ है वो बाहर वालों को दिखाने के लिए कि अरे हमने यज्ञ किया, टेम्पल एस्टेब्लिश हुआ सही में, राइट, टेम्पल ओपनिंग हुआ, क्योंकि बाहर वालों को कुछ तो चाहिए, हाँ आग जलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, राइट। और वास्तव में जो ये कलयुग का यज्ञ है वो कीर्तन है, ऐसा कीर्तन करेंगे तो हमारा डीटी इंस्टॉलेशन हो गया। लग रहा है। वैसे एक सैन फ्रांसिस्को में एक डिवोटी भक्त नहीं था पहले, वो धीरे धीरे बना, तो उसको चाहिए था कि अरे मेरे घर में हाउस वार्मिंग पार्टी हो तो उसमें यज्ञ होना चाहिए।
तो डिवोटीज को बुलाया, डिवोटीज वो चैंटिंग, बोला अरे यज्ञ किधर है, यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। तो ऐसा इंसिस्ट किया, तो फिर वो ले आए थोड़ी लकड़ियां, जलाया, जैसे ही जलाए वहां पे स्मोक अलार्म बज गया, चलो गए पूरे घर में पारिया। कलयुग का संकेत है। And of immovable and Himalayas. I think we'll do a last sloka and then we'll stop. Ashwataha sarva vrikshanam devarshinam cha narada gandharvanam chitrartha siddhanam kapilo muni. Of all the trees, I am the banyan tree. banyan tree किसी ने देखा? मैंने एक देखा था, आई थिंक वंशी वट पे। उसका जड़ कहाँ है, उसका मूल ब्रांच कौन सा है, मतलब ट्रंक कौन सा, पता ही नहीं चलता है। हाँ, सो लिटरली ये पूरे रूम जितना ट्री होगा वो मिला करके उतना बड़ा एक ट्री, सिंगल ट्री है वंशी वट में। सो एंड देन ऑफ सेजेस अमंग द डेमिगॉड्स आई एम नारद, राइट? देवर्षियों में मैं नारद हूँ। ऑफ गंधर्वास आई एम चित्ररथा, sorry. So Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully. गंधर्व जो है बहुत सुंदर सुंदर गान करते हैं और वाद्य बजाते हैं। Among the perfect living entities, Kapila, the son of Devahuti, is representative of Krishna. Kapila देव तो स्वयं भगवान के अवतार है, right? तो perfected sage में Kapila Muni. He is considered as incarnation of Krishna and his philosophy is mentioned in Srimad Bhagavatam. Later, another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. There's a gulf of difference between the two. तो एक वास्तव में कपिल जो है भगवान के अवतार कपिल देव, और एक और इम्पोस्टर कपिल आए थे। इम्पोस्टर मतलब एक ढोंगी कपिला उसके बाद में भी आए थे कुछ हजार साल पहले, जो कि अपने आप को कपिल मुनि बना करके अपने एक अलग से सांख्य फिलॉसफी दिया था, जो कि वास्तव में एथियस्टिक था, मतलब उसको भगवान को नकार दे वैसा फिलॉसफी भी प्रोपेगेट करा। ठीक है, we'll stop here. किसी का कोई प्रश्न है या any reflection, something you liked about the class which stuck in your head or and you're taking it back? So कुछ भी पॉइंट याद है तो आप बता सकते हैं। क्या अच्छा लगा आपको पूरी क्लास में, या कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। So usually I have attended classes, like but पीछे वो होता है ना regular classes में 8 o'clock, तो मैं आती थी पहले, but then some घर के काम वगैरह पे मैंने छोड़ दिया होता है। मस्तली आपके साथ इतने कम लोगों में आए अटेंड, ऑनलाइन तो चलता रहता है। ऐसे एक्चुअली ग्रुप बड़ा है, बड़ा आज बहुत सारे लोग बाहर गए हैं। बारिश की वजह से भी टेंशन आ रही है। हाँ, some people are gone to वृंदावन, और कुछ लोग एक प्रभु जी का बर्थडे है तो वहां पे गए होंगे, तो इसलिए थोड़ा संख्या कम है। कोई प्रश्न है आपका? नहीं, मैं यही बोलना चाह रही थी कि मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं गीता का साथ गीता पढ़ सकूं, आपने जो समझाया है वो इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि हम सिर्फ श्लोक पढ़ रहे हैं और आप उदाहरण जो दे रहे हैं सब प्रभुपाद के उदाहरण है, मैं जैसे रिपीट कर रही हूँ। मेरा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से सही समय पे सही चीज होती है। मैंने पहले बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मैं गीता पढ़ूं। ये everybody is doing, so I should also take that. This is the first time when the help of my friend, or more like my sister, she's upbringing me. I think that's all that she's introduced me to spirituality, which is really Very nice. which is really helping me, and I'm being able to understand more clearly and more. And I can relate I can relate my life and I can relate my experiences now. Very nice. Yes. So भगवद गीता का पर्पस ही ये है कि हम सुने और अपने जीवन में उतारे, बिकॉज भगवान जो जो बोल रहे हैं we can relate to everything.
क्यों? Because he is talking about the soul. आप कोई भी स्थिति में हो, आप जीवात्मा ही हैं, right? And the kind of experiences you'll go through in the life also. कृष्ण एक एक ऐसा पॉइंट बताएंगे, ऐसा लगा रही ये तो मेरे लिए है. तो ऐसा definitely लगेगा. That's very valid experience of everyone practically. So yes, you're on the right path. Morning में I attend that promotion online. रामानंद जो दुबई में थी ना क्लास, अब वो मैं attend करती हूँ तो मेरे पास पता है मेरे सारे सवालों के जवाब Yes. मेरे लिए ये है। अर्जुन इतना सारा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, जैसे मैंने अब आपको बताया था सेकंड चैप्टर में तो भगवान ने सारे जवाब दे दिए. उसको इलैबोरेटली डिस्क्राइब आगे क्यों कर रहे हैं, क्यों और सवाल पूछ रहे हैं हमारे लिए. बिकॉज अर्जुन इज एक्चुअली a pure devotee, perfected being already. He is put into illusion. उनको जानबूझ करके illusion में डाला गया ताकि वो पूछ सके और भगवत गीता पूरे विश्व को मिल सके. Yes. तो प्रभु जी ये इंटरेस्ट ले रही है ना. हाँ, that is very good. From her. That is very good. Anything, man. Yes, Manju. हाँ. हाँ. That's what I want to ask. What's the power of manifestation? Power of manifestation. Like I've heard a lot in like online. Manifestation. She's talking manifesting in different ways. People Huh. have word manifesting. Okay. So yeah, I think the background of your question is a little different. I don't have that enough background, but I think I know where you're coming from. So see, manifestation मतलब क्या होता है? Manifestation means something that manifests in front of me or is visible to me like that, right? So भगवान इस context में क्या बता रहे हैं कि उनके अलग अलग विभूतियां हैं. विभूतियां means opulences, right? अलग अलग विभूतियां हैं, शक्तियां हैं जो काम कर रही है, right? And where all are his energies manifested or visible to Arjuna or anyone else, Krishna is talking about that. इसलिए मैंने बताया कि भगवान खाली earthly examples देंगे which is visible to our eyes. He is trying to compare his opulences or his energies within our experience, which is manifested to our eyes. So that's the context. I hope you. हाँ, Hare Krishna. Like the mountains, Krishna is saying that it's made. हाँ. So he is explaining that regard. About, What is visible to our eyes within that? Okay. Any other questions? Anything else? Anyone? You have any questions? Okay, we'll stop here. Thank you so much. Bhagavad Gita ki jai. We'll do short kirtan and then go for prasadam.